गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएससी मैथ्स जेनेसिस क्लासेस। बच्चों, आपको हमने पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन बताया था। आज भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। बस छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में आपको देते जाएंगे। बस हमारे साथ बने रहना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन गिवन है, सो दैट the following function is continuous at x is equal 0. Given function is fx is equal 1 plus 2x to the power 1 by x. X does not equal 0. X does not equal 0. 0 x is equal 0. बच्चों, आपको फंक्शन गिवन है, ये देखिएगा fx इज इक्वल, ये देखो 1 प्लस 2x टू दी पावर 1 बाई एक्स। आपको इस फंक्शन को x इज इक्वल 0 एट x इज इक्वल 0 क्या फाइंड करना है? कंटिन्यूअस फाइंड करना है। फर्स्टली वी हैव टू सीन डेफिनेशन बाय fx एट x इज इक्वल 0। आप सबसे पहले क्या देखिएगा, x इज इक्वल 0 पर जो फंक्शन है क्या गिवन है। गिवन दैट एट x is equal 0 fx is equal 0 means f0 is equal 0 or at x is equal 0 fx is equal 0. This is definition. Also find right and left limit. If right and left limit is 0, then fx is continuous at x is equal 0. Now right limit x tends to 0 plus fx, limit h tends to 0, 0 plus means 0 plus h, you know. Given that fx is equal 1 plus 2x to the power 1 by x, x definition x not is equal 0, meaning of x not is equal 0, x is less than 0 and x is greater than 0, both are contained. Then limit h tends to 0, f of h, that is f of h 1 plus 2h to the power 1 by h. Limit h tends to 0, 1 plus 2h to the power 1 by h. You know, limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x, that is exponential, and limit x tends to infinity, 1 plus 1 by x to the power x, that is exponential. हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। ये राइट लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये देखिएगा एक्स एक्स, यहां पर एक्स एक्स आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो 1 प्लस 2h और यहां पर 1/2h। आपने क्या किया, पावर लॉ के थ्रू 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को आप कैंसिल कीजिए, आपको यहां पर 1 प्लस 2h टू दी पावर 1 बाई h मिलेगा। ठीक, तो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू दी पावर 1 बाई x मीन्स e। तो यूजिंग दिस फार्मूला, दिस इज e, that is e to the power 2. This is right hand limit. Again we have to find left hand limit. तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, 0 माइनस f of x is equal limit, meaning of limit x tends to 0 minus f of x is f of 0 minus h. Using function fx means fx is 1 plus 2h to the power 1 by x. तो 1 plus 2 x replaced by minus h, 1 plus 2 minus h,
minus 1 upon h. Limit h tends to 0, 1 plus minus 2h to the power minus 1 upon h. अब इसको भी यहां पर क्या मेकिंग करें, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स मेकिंग करें. अब ये देखिएगा यहां पर भी सिमिलरली वैसे ही करना है, 1 प्लस माइनस 2h और टू दी पावर 1 अपॉन माइनस 2h, पावर में है ये पावर, minus 1 upon 2h total whole square. Using formula, this is a, that is a square, such that right limit is a square, left limit is a square and definition is, अब देखिए ये क्या हो गया, इक्वल. हेंस यहां पर आप जीरो राइट कर सकते हैं. हेंस fx is continuous at x is equal 0. Now next question, test the following function for continuity at the origin. Origin means x is equal 0. Given function fx is equal x e to the power 1 by x dividing by 1 plus e to the power 1 by x, x does not equal to 0, 0, x equal to 0. Firstly, we have to see formula of fx, given that at x is equal 0, f0 is 0. Given at x is equal 0, f0 is equal 0. Also find right limit and left limit. Suppose right limit is 0, left limit is 0, then function fx is continuous at x is equal 0. Now left limit, right limit, limit x tends to 0 plus f of x is equal limit h tends to 0 f 0 plus h, means limit h tends to 0 f of h. Since given fx is x e to the power 1 by x 1 plus e to the power 1 by x, is x replacing by h, that is limit h tends to 0 h e to the power 1 by h dividing by 1 plus e to the power 1 by h. Putting h tends to 0, then 0 into infinity 1 plus infinite, but this is not defined. So dividing numerator and denominator by e to the power 1 by h, you know 1 by 0 is infinite, 1 by infinite is 0, e to the power infinite infinite, e to the power minus infinite 0, 1 plus infinite infinite, infinite minus 1 infinite, 1 minus infinite minus infinite, 1 plus infinite plus 1, infinite minus 1 infinite. तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e to the power h e to the power 1 by h dividing by 1 plus e to the power 1 by h. This is not defined, so dividing numerator and denominator by e to the power 1 by h. Dividing numerator and denominator by e to the power 1 by h. Now limit h tends to 0, this is h dividing by this 1 by h plus कितना 1. Limit h tends to 0, h dividing by e to the power minus h minus 1 by h plus 1. Putting limit 0 upon e to the power minus 1 by 0 plus 1 means 0 upon e to the power infinity plus 1, 0 upon 0 plus 1, finally 0. Again find left limit, limit x tends to 0 minus f of x is equal limit h tends to 0 f 0 minus h.
that is limit h tends to 0 f minus h using function fx is equal x e to the power 1 by x dividing by 1 plus e to the power 1 by x. Replacing x by minus h, that is limit h tends to 0 minus h e to the power minus 1 by h e to the power minus 1 by h plus 1 or 1 plus e to the power 1 by h. You know, putting this limit means this is defined 0 e to the power minus 1 by 0 1 plus e to the power minus 1 by 0 means minus 0 into e to the power minus infinity upon one plus e to the power minus infinity means 0 into 0 1 plus 0 that is 0 such that क्या क्या आपने मैंने फाइंड किया राइट लिमिट 0 मिला लेफ्ट लिमिट is 0 and definition is 0 hence fx is continuous at x is equal 0. बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से करते रहना है. ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार.